Yeah, yesterday we have seen deviation through the thin prism. ये फार्मूला आया था, और अगर दूसरे मीडियम में है तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है ना. Otherwise, n minus 1 into a, n being the refractive index of the prism. If it is in the medium of refractive index n1, then we have to divide. N2 will be the refractive index of prism. So this we have seen how to solve this question. Thin prism of P1 of angle this much and refractive index this much is combined with the another prism P2 of refractive index this to produce the dispersion without deviation. The deviation is 0. तो deviation जो है del 1 plus del 2 should be 0. दोनों का नेट डिविएशन 0 हो जाए तो एंगल मिल जाएगा. इसका A2 निकालना है तो del 1 plus del 2 is 0. वैल्यू फार्मूला पुट किया, सॉल्व किया. A2 सेकंड प्रिज्म का एंगल -3 डिग्री आ गया. माइनस मीन्स सेकंड प्रिज्म शुड बी केप्ट इन्वर्टेड. क्या करेगा, यहाँ से डिविएट होगी, फिर ये इसको न्यूट्रलाइज करके both rays will be parallel to each other. Net deviation is called 0. If it is coming out parallel to the incident ray. Minus sign is inverted, but we have to write magnitude. 3 degree is the answer. All right. More is the refractive index, less will be the angle coming. Newton showed that earlier it was thought that colors are inside the prism, but by taking the inverted prism, Newton took the inverted prism, and again final light coming is white light, white entering dispersion, and then it is neutralizing this. If we take the another prism, inverted prism, that will neutralize the effect of dispersion. Again, all colors joining and becoming white light. So that's how he showed colors are not inside the prism, they are in the sunlight. Newton did this experiment by taking inverted one. Now next one is the dispersion of light. This phenomena is when the light passes through the prism, sunlight or white light, we get the different colors. So this phenomena is called dispersion of light, breaking the light into its component colors or splitting the white light into its component color is called dispersion. So we have seen the formula. Deviation is n minus 1 into a. N is the refractive index which depends upon the different wavelength, inversely proportional to lambda. For red, lambda for red is more, therefore refractive index for red is less, so it will deviate less. Deviation के फार्मूले में refractive index तो सबसे कम deviation rate का होगा and सबसे ज्यादा violet का होगा. We can see here violet का deviation अगर हम measure करेंगे this much होगा. ठीक है. For red color medium is rarer. हमने बताया था red के लिए rarer है. Rarer. RR. Rarer means refractive index less. So
deviation depends upon the refractive index. More what is called refractive index, more deviation. हम उसको वैसे भी इमेजिन कर सकते हैं, अगर हमने इधर एक कॉल लगा दिया यहाँ पर, ये प्रिज्म अपना लेंस बन गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में भी हमने देखा था रेड कलर की फोकल लेंथ मोर होती है, वायलेट की लेस होती है। डू यू रिमेम्बर दैट? फॉर रेड कलर फोकल लेंथ वाज मोर इन कॉन्वेक्स लेंस। तो दो प्रिज्म ज्वाइन कर दो इन्वर्टेड, so it is equivalent to convex lens. Here also red is meeting ahead of the violet. This is what is called this phenomenon dispersion. ठीक है, no problem. और angular dispersion में जो इनका जो एंगल है डिफरेंस है ना, ये एंगल रेड एंड वायलेट के बीच का एंगल, ये दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन थीटा। तो इसको वायलेट के डिवीएशन से रेड कलर के डिवीजन से माइनस कर देंगे वायलेट को, तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा। तो एंगुलर डिस्पर्शन इज द डिफरेंस ऑफ डिविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स, रेड एंड वायलेट, है ना। और एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट रेस, दोनों के बीच का एंगल बातें की है। तो डेल वी माइनस डेल आर, दैट विल बी द एंगल। एंगल पूछा है ना, एंगल में एंगल दिया आएगा। तो वायलेट की डिविएशन पुट कर दी, रेड की पुट कर दी, तो सम टर्म्स विल गेट कैंसिल, ये बचेगा एनवी माइनस एन आर इंटू ए। इट शुड बी इन रेडियन, है ना, बट अगर ए डिग्री में दिया है तो आंसर डिग्री में आ जाएगा, डिग्री में ही छोड़ देंगे उसको, ठीक है। Angular dispersion is related to angle between the two extreme colors, violet and red, है ना। It also depends upon a thickness बढ़ेगी तो angular dispersion भी बढ़ेगा। Got it? इसमें एक दो पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दे जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एक ही पॉइंट है, दैट्स ऑल। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, तो डिस्पर्सिव पावर में क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्शन थीटा को मीन डिवीजन से डिवाइड करना पड़ता है। तो थीटा अपॉन मीन डिवीजन मतलब येलो का मीन डिवीजन होता है, नहीं तो इन दोनों का मीन करके इनका एवरेज लेना पड़ता है एक्चुअल में, इसीलिए मीन बोला जाता है, विच इज इक्वल टू डिवीजन ऑफ येलो। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर हमने ये वाली, आर वी कैन राइट डेल वी माइनस डेल आर, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और मीन डिवीजन इज n minus 1 into a, n will be the mean of these two colors. A getting cancelled, nv minus nr upon n minus 1, which is independent of a पे depend नहीं कर रहा है, a getting cancelled, n will be mean defective index violet plus red का mean divided by 2, which is very close to n y, yellow का, yellow is having mean of these two colors refractive index, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर में एंगुलर डिस्पर्शन को डेविएशन से, मीन डेविएशन से डिवाइड करना। नो यूनिट, because this is also angle, this is also angle. Omega symbol है, which is the symbol for angular frequency also, angular speed also, है ना। This is the extra point. Are you there? Yes, sir. All right.
ये हो गया। अभी हम लोग कैन वी सी द ये अभी दिस sunrise 2 minutes early, 2 minutes late sunset and rainbows. Rainbows are they're not in course now. प्राइमरी रेनबोज होते हैं, सेकेंडरी रेनबोज होते हैं, तो ये कोर्स में नहीं है, बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दिया। इसमें देखो प्राइमरी रेनबो इज ब्राइट रेनबो, ब्राइट उसमें रेड कलर ऊपर होता है, वायलेट सफेद नीचे रहता है, एंड देयर आर 2 रिफ्लेक्शंस एंड 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ड्रॉप है, रेन ड्रॉप्स है ना। एंड सेकेंडरी रेनबो इज फेंट अबाउट द प्राइमरी। कभी कभी प्राइमरी रेनबो के ऊपर दिखता है एक लार्जर एंगल पर, है ना, 53 से आई मीन 50 to 53, और ये कितने एंगल पर है, 40 to 42, है ना। और इन्वर्टेड रहता है, ये वायलेट टॉप में रहेगा, रेड नीचे रहेगा। देयर आर 2 रिफ्लेक्शंस एंड 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द ईच ड्रॉप। तो दिस इज नॉट इन डिलीटेड पार्ट में है, ये जस्ट वी कैन लीव इट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी डिलीटेड में है। स्कैटरिंग में क्या होता है, जो सनलाइट जब पास होती है एटमॉस्फेयर से, इट इज स्कैटर्ड अवे, स्प्रेड हो जाती है इनवर्स। इट इज अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका सबसे कम है, वॉयलेट का, तो वॉयलेट कलर स्कैटर्ड मोस्ट, है ना। देयरफॉर we see that bluish color of the sky, because blue and violet के ज्यादा dispersion, ज्यादा spreading होती है in the atmosphere. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप्स। तो माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन है, that was done to study the very very small particles like virus, bacteria and all, उसको स्टडी करने के लिए, छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बनाया गया था। बट बाद में दे became very useful when small objects were seen through the microscope and bacteria and viruses were detected by that. Simple microscope में we have only single lens of small focal length, है ना, and let's see इसका अगर अपने पास एक माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, we will have the two lenses, convex lenses, both of the small focal length. Let's see, do we have the video of this microscope and telescope का देखते हैं। First one is the simple microscope. It has the one convex lens, also called the magnifying glass, है ना, used in the lab and other places. Magnifying power or angular magnification is defined by the image angle to the object angle. एंगल से डिफाइन करते हैं इसको, मैग्नीफाइंग पावर एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन को। तो फर्स्ट वन इज we can have the 2 settings, two extreme settings we can say. When the final image is at D is the least distance of distinct vision, which is 25 centimeters from the normal eye, up to which we can see the object clearly. ठीक है, it is when the final image is D, definition remains same, जो हमने जनरल डेफिनेशन यही रहेगी, रेशियो ऑफ द इमेज एंगल टू द ऑब्जेक्ट एंगल when both are at D। इमेज को भी डी पर, इमेज तो डी पर बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को भी शिफ्ट करके डी पर शिफ्ट करके तब एंगल लेना है, अदरवाइज यू फाइंड बोथ द एंगल्स आर इक्वल। ऑब्जेक्ट का एंगल भी बीटा आ रहा है और इमेज का एंगल भी बीटा आ रहा है, इन दैट केस रेशियो विल बी ऑलवेज 1, so no use, है ना। रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1, मैग्नीफाइंग पावर शुड बी मोर देन 1। इसको भी शिफ्ट करना है 25 सेंटीमीटर पर, तब एंगल लेना है, बिकॉज एट द 25 at 25 this at D only we can see the
इमेज प्रॉपर ऑब्जेक्ट प्रॉपरली, है ना। उससे पहले तुम वी कैन नॉट सी इट, है ना। इफ ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, दैट इज लेस देन डी, वी कैन नॉट सी। तो करते क्या है इसमें, एक्चुअली ऑब्जेक्ट को क्लोज ले आते हैं और लेंस लगा के उसकी इमेज 25 पर बना लेते हैं, तो विजिबिलिटी इज इजियर, वी कैन सी इट इजिली, otherwise eye will be under strain. So that's how we use this, है ना। Object should be within the focal point, then only image will be same side. तो focal point should be small. तो दोनों को हमने डी पर शिफ्ट करने के बाद एंगल लेना है। तो बीटा इज नथिंग बट एच, ये एच हो गया अपॉन ये यू हो गया माइनस यू, है ना, और अल्फा बीटा हो गया, है ना। एंगल सेम में देखो, चाहिए यहाँ तक देखो चाहे यहाँ तक देखो, तो इस ये दीज आर नोन टू अस, देयरफॉर हमने यहाँ से बीटा लिया। फिर अल्फा के लिए ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया 25 पर यहाँ पर, एंड देन वी हैव सीन द ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा, तो विच विल बी एच अपॉन इमेज, डी पर इमेज बननी है तो दैट विल बी इनफैक्ट वी माइनस वी, बाद में इसकी वैल्यू करेंगे और ये सब कैंसिल हो गया, v by u आ गया। दिस इज आल्सो इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन, पढ़ा था हमने, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, उसके बराबर मिलना है ये। एंड नाउ v इज माइनस d एंड u इज माइनस u, है ना, तो d by u आ जाएगा, v की जगह d पुट कर देंगे, तो d by u। नाउ 1 by u की वैल्यू पुट करनी है हमें, इसको हम वापस इसी अगेन, एक तो रिलेशन ये जनरल रिलेशन हो गया, but I mean two extreme cases में this will be valid for all the cases, है। two extreme cases में हमें चाहिए, यहाँ से वापस आइए, v into 1 by u में लेंस फॉर्मूले से देखो, 1 by u की वैल्यू कितनी आएगी, लेंस फॉर्मूले से 1 by v माइनस 1 by f, है ना। तो यहाँ से हमने u वाला टर्म इधर शिफ्ट कर दिया, f वाला इधर ले आए, ये वाला इधर, तो 1 by v माइनस 1 by f, v को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे v by f, है ना। नाउ v की वैल्यू फिर से माइनस d पुट कर सकते हैं, तो दिस इज द रिलेशन 1 प्लस d by f, कब है, जब इमेज d पर बन रही है। दिस इज द मेन रिलेशन। जनरली क्वेश्चन जो आता है, मेक द रे डायग्राम एंड राइट द मैग्निफिकेशन, बट समटाइम दे आस्क यू द डेरिवेशन आल्सो, so you are supposed to know the derivation, है ना। this point you can skip, ये वाला, ये extra point है, this is the main derivation 1 plus d by f, ठीक है। it is maximum value of m, but eyes are strained, eye के ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है, ज्यादा देर तक देख नहीं सकते, your eyes will be under strain, ठीक है, but magnification is maximum, more than this cannot be obtained। पॉजिटिव आएगा देखो, d by f, d को अभी नाउ d की वैल्यू प्लस 25 पुट करनी है, ऑलरेडी हमने वहां पे माइनस पुट कर दिया था, तो यू डोंट हैव टू पुट इट नाउ माइनस, और f तो प्लस ही है, इट इज द कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो मैग्निफिकेशन विल बी कमिंग प्लस बिकॉज यू कैन सी बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इरेक्ट है दोनों, है ना। तो ये हो गया आपका फाइनल इमेज एट डी, एंड सेकंड केस कैन बी, ठीक है, यहाँ पर फाइनल इमेज दैट वी कैन सी होल थिंग टुगेदर। ओके, पहले ऐसा देख लो। सेकंड केस, when final image at infinity, also called normal adjustment, उस समय क्या करना पड़ेगा आपको, again definition, ratio of the image angle to the object angle when final image is at infinity, फाइनल इमेज को इंफिनिटी पर रखना है और ऑब्जेक्ट को डी पर रख के एंगल देखना है। तो
फिर से अभी क्या आएगा आपका एच अपॉन, अभी फोकल लेंथ पर, फोकल पॉइंट पर होनी चाहिए, यू की जगह माइनस एफ लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या आएगा, एच अपॉन माइनस डी, ऑब्जेक्ट को डी पर शिफ्ट करके तभी एंगल लेना है। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज डी बाई एफ, दैट्स ऑल, यही आंसर होगा। उसमें वन प्लस डी बाई एफ है, इफ यू सी इट केयरफुली, ये दिस इज प्लस वन है ना, दिस इज वन एक्स्ट्रा, इसमें ओनली डी बाई एफ, इसमें वन प्लस डी बाई, दिस इज वन मोर एंड दिस इज वन लेस एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। दिस इज मिनिमम, इनफैक्ट मिनिमम है, एक्सट्रीम पर पहुंच गए ना यहाँ पर, इससे बाहर तो निकल नहीं सकते क्योंकि आप फिर इधर इमेज बनेगी, दूसरी तरफ बनेगी, है ना। तो सेम साइड में इमेज चाहिए, तो अप टू एफ वी कैन गो, in that case it becomes minimum, but eyes are relaxed, therefore it is called normal adjustment, है ना। eyes कैसे रहती है, relax रहती है, तो eyes remains normal, relax means normal, eyes remain normal, therefore it is called normal। जब फाइनल इमेज हम डी इंफिनिटी पर बनाते हैं, eyes remains normal, है ना, but magnification is less as compared to when final image is at 25 centimeter, that is D, ठीक है। तो ये दोनों आपको फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे, और डी की वैल्यू +25 पुट करना है। ऑलराइट, मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, जैसे आपको 5 सेंटीमीटर दे दें, तो मैक्सिमम कितना आएगा, 1 प्लस डी बाई एफ 6 आ जाएगा, मिनिमम कितना आएगा, डी बाई एफ ओनली 5 रहेगा, दोनों का डिफरेंस जो है 1 का रहेगा हमेशा। फाइंड द लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन बोथ केसेस, तो ये बीच का जो बिगिनिंग में फार्मूला आया था m इज इक्वल टू डी बाई यू, उससे यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस में आई मीन फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन 6 था, तो 4.16 आ जाएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड केस में 5 है, तो और सेकंड केस में तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, फोकल पॉइंट पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इमेज इंफिनिटी पर आएगी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आ रहा है 5 ही आ रहा है, फोकल पॉइंट पे रखना है। बट सपोज ये फार्मूला यूज नहीं ध्यान नहीं आ रहा है, तो गो बैक टू बेसिक, फोकल लेंथ दी है, और और फर्स्ट केस में कहाँ पर वी वी 25 पर होना चाहिए, -25 पुट कर दो तो यू आ जाएगा, और सेकंड केस में इनफाइनाइट है तो फोकल पॉइंट पे होनी चाहिए, है ना। तो दीज आर जस्ट लेंस फार्मूला यूज करके भी हम निकाल सकते हैं, इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस, ये फार्मूला अगर याद नहीं आ रहा है, डी बाई एफ यहाँ पे हमने लिखा, ये वाला लिखा, डी बाई यू, सॉरी, if you don't remember, no problem, go back to the basics, लेंस फार्मूला से निकाल लो। But generally they ask you the magnification, you remember the formula for magnification correctly, that's all, 1 plus d by f and d by f, that's all, ठीक है। Now magnification is not much, no, बहुत 6 है, और इसमें 6x we can call it, and here we can call it 5x, 5 times, है ना। तो two lenses can be used, both will be providing the magnification, that is called compound microscope, है ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 29 था, यहाँ पर आई थिंक बी पार्ट के लिए उन्होंने पढ़ दिया एंगुलर मैग्निफिकेशन, नहीं, हाँ, लीनियर मैग्निफिकेशन पहले पूछा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए यहाँ पर डी बाई यू यूज करना पड़ेगा।
Any problem? Yes, so the screen went black. Okay. We'll ask, sir. Students, there is some network issue with sir. So sir will continue that numerical tomorrow. You all can leave the class. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Welcome.